अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। देखिए यहाँ पे भी हमें उसने नहीं बताया कि डायरेक्टली वेरीज या इन्वर्सली, तो तभी जब जॉइंटली आएगा तभी डायरेक्टली होगा। अब यहाँ पे जब जस्ट लिखा होगा कि वेरीज, जैसे यहाँ पे है कि द सपोर्टिंग लोड वेरीज एज द फोर्थ, तो इसका मतलब भी क्या होगा, डायरेक्टली वेरीज कर रहा है। सो डायरेक्टली है, varies directly as the fourth power of d, so c is directly proportional to d4, and inversely as the square of its length, and inversely as l square, so c is directly proportional to d4 over l square, so c is equal to k d4 over l square। कांस्टेंट लगाया हमने, इक्वेशन 1 आ गई हमारे पास। नाउ we have given the value of c 63 tons and d is equal to 6 inch, which is equal to 0.5 feet, and l is equal to 30, so put it in equation 1, we get value of k, which is 907200. Now put the value of k in equation 1. So we get c is equal to 907200 d4 over l square. So now we have to find the value of l when d is equal to 4 and c is equal to 28. Put in equation 2, we get l is equal to 20 feet. So question number 7 उसके हमारा complete. Hopefully आपको समझ आ गया होगा. If you have any doubt, you can ask in comment section. Thank you.